Okay, let's begin. So, last week was very tough for the markets. We closed lower on all the five sessions, and we breached the 200 DMA. 24,000 भी breach हो गया. We started the week strong around 24,800 जितना, but 1,000 point, almost more than 1,000 point का एक fall देखने को मिला within a week. So the fall was really a sharp one. Okay, so now the most important thing is जो Friday का low था अराउंड 525 535, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए आज के सेशन में. दैट इज द फर्स्ट थिंग. अगर उसके नीचे हम चले गए देन वी माइट टेस्ट दिस वन 250 263 वाला लेवल, एंड बिलो दैट द फॉल में बी अ बिट मोर शार्प बिकॉज यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला था हमको. अगर ये फिर से टूट जाता है देन वी माइट सी दैट सम शार्प फॉल हैपनिंग बिलो 23,000 level, and that is the possibility. So this is one side, but I think for today's session, the most important will be the Friday's low. Last week का जो low है, that is around 535, 23, 535. If we hold that level, if we continue to trade about that level till that time, I don't see some fresh leg of selling coming. Okay. So the volume was really high on Friday's session. Okay, a lot of institutional activity was also seen. On the flip side, I think the 200 DMA is very important. The black line 200 DMA है, 23,800 के अराउंड है. अगर हम एक बार उसके ऊपर बंद आ जाते हैं, once we close above that level, we might see some bit of rally again, and we might try to move around 21 and 50 DMA again. So last week 21, 50 और 200 दोनों breach हुए थे. So ideally we want all the three of them to be reclaimed this week for some positive gains. Right. Some news, if you see, Reliance Digital plans to acquire stake in Health Alliance Group for $10 million. NTPC Green signed with MOU with Bihar government, थोड़ा बड़ा वाला है, to collaborate on renewable energy projects. Oro Pharma's arm secure approval from UK's Medicine and Healthcare Product Regulatory. PEL's board approved rising fund up to 2,000 crore via QIP in one or more tranches. Now, global market, after many days of problem, I think December में बहुत प्रॉब्लम हुआ था ग्लोबल मार्केट्स में, स्पेशली द यूएस मार्केट. बट on Friday's session, it was a strong one. All the three indexes closed around 1% higher, which is good. Okay. And in the Asian market this morning, Shanghai is trading around 0.5% higher, while Nikkei is 1% around, and Kospi is up 1.5%. So global markets are having positive Q. So that is good for our market as well, because globally जिस तरह का market Qs है, that is positive. And I think this leg of rally is more due to the global issues than the local issues. जो हमारा Q2 में प्रॉब्लम था कि Q2 का अर्निंग्स थोड़ा वीक आ रहा है, Q3 में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था, वो आई थिंक वो लेग खत्म हो गया था, वो 23,300 तक. ठीक है. वहां से जो रैली आई थी दैट वाज अ रिलीफ रैली विद द लोकल रीजंस. बट अभी जो लास्ट वीक का पूरा 5 दिन का फॉल है, आई थिंक दैट वाज मोर ऑफ ड्यू टू द ग्लोबल इश्यूज. ग्लोबल की वजह से जो यूएस के इश्यूज है, वहां पे रेट कट का प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं, बट रेट कट हुआ, बट दो रेट कट कम हो गए 25 में, वो सब चीजें हैं. ग्लोबल मार्केट का फॉल है. ठीक है. ऑल ड्यू टू ऑल दोज रीजंस हमारा थोड़ा नीचे आया था. बट आई थिंक इफ ग्लोबल मार्केट्स आर इम्प्रूविंग, we might do well as well, or very well. That's the case. Okay. So yeah, if Nifty also indicates a positive opening, if you compare it with the futures level, तकरीबन 150 पॉइंट की तेजी के साथ हम खुलेंगे. वी माइट ओपन अबाउट 23,700 इन द कैश मार्केट, एंड फ्रॉम देयर वी वांट अ गुड रैली. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओपनिंग में अगर, सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ इन टुडे सेशन इफ वी ओपन गुड, थोड़ी देर सस्टेन हुए, और अगर वहां से रिवर्सल आके फ्राइडेज लो, इफ वी ब्रीच फ्राइडेज लो आफ्टर दैट रिवर्सल टुडे, गुड ओपनिंग, then I think it will be very tough for the market for the next few days or week.
because after some good opening, if we are not able to even sustain last week's low, then we might see some big problem, right? So the first thing you should watch out for that level. The last part, stock of the day or the chart of the day, Torrent Pharma. Here we are seeing a very good setup. So pharma stocks are doing well. Okay, the entire sector is doing well, and Torrent is a leader like amongst the pharma stock. Fundamentally भी अगर देखें the EPS growth is solid, the sales growth is excellent. Okay, ROE of 20%, number of fund holding the stocks increasing, EPS strength is good, even RS is good. 64 है, but it's with blue dot. It's at a 52-week high. RS line is at a 52-week high, which is positive. Buyer demand is also decent. यहाँ पे एक छोटा बेस बना था, वो ब्रीच हुआ, एक कप विथ हैंडल अभी बना है, एंड ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट देखने को मिला था थर्सडे के सेशन में, but in the market volatility on Friday it failed to hold it, but इतने वॉल्यूम पे नहीं बिका था फ्राइडे को, so that is positive. So once again, when it reclaims this 34.55 and with a strong volume, then that will be the ideal buy zone. And overall the setup is also good. एक कप विथ हैंडल भी रीसेंबल कर रहा है यहाँ पे अगर आप देखें तो, एंड कप विथ हैंडल भी है, so it's a good setup. Let's see how and that if the things go, this stock can be on your watch list. Okay, so thank you for joining. That's it for today's session. See you again tomorrow at 8:45 a.m.